Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Bindass Educator. So बच्चे जैसे कि आप thumbnail में देख पा रहे हैं, today we are going to start the concepts of surface energy. Okay, we are going to start the concepts of surface energy. That means we will be studying that what is surface energy and why we are studying surface energy in this chapter and what is the use. Okay, why we are studying it and what is the use. So these things we are going to study in this chapter and how to calculate. Okay, how to calculate surface energy. So these are the things which we are going to study in this chapter. Okay, so let us start our chapter, that is concepts of surface energy. तो चलिए सरफेस एनर्जी जान लेते हैं कि सरफेस एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। बच्चे जो लिक्विड का फ्री सरफेस होता है, ठीक है, जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास वापस से क्या है, एक ग्लास है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक ग्लास जो है यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। इस ग्लास में हमने क्या फिल किया, इस ग्लास में हमने वाटर को फिल किया। द वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ग्लास। ओके, एवरीवेयर वाटर इज प्रेजेंट। Okay, so now if water is present everywhere, so how do we know that what is the surface energy and what is the concept behind it? So basically I told you, okay, I told you in the first lecture itself that the surface of the liquid, that is we can say the free surface, okay, that is nothing but your free surface. Okay, free surface of the liquid possess some energy and it always try to minimize it. Okay, but we studied the term the energy, surface energy. Okay, free surface has an energy, it tries to minimize it by the help of the cohesive force, that is surface tension. Okay, so that was surface tension, and the cause of surface tension is cohesive force. And what is trying to do, we studied that the raindrops are round, and why they are round. Okay, we studied that these raindrops are always round, and why they are round. So we studied the concept that the raindrops are round because they wants to minimize the surface area. And what they will get by minimizing the surface area, okay, by minimizing the surface area, they minimize the surface energy, and that energy is nothing but your surface energy. Okay, so basically what happens, the molecules which are present at the surface, okay, molecules present at the free surface, so we can write here that the molecules of, we can write here with a different color we will use. So suppose now we can write that the molecules of surface possess molecules of surface possess more energy. Molecules of surface possess more energy than the molecules molecule present inside. Okay, and that energy, that excess energy or that additional energy, which is possessed by surface molecule. Okay, so that additional energy is called as what? Your surface energy. Okay, that is called as surface energy. Okay, so I hope that you have understood. Okay, so now what we will do, we will study this concept with the help of an example. Okay, so let us remove this everything. Okay,
So I'll just rub it out. Now, how do we understand or how do we find the surface energy? So suppose that we are having a film, okay, a very thin film of soap. So you might have used at your in your childhood, or even now also, you might have used some kind of this thing. Okay, suppose this is a stick. Okay, so what we do generally, we just dip it into a soap solution. So what happens due to the soap solution? Due to the soap solution, a very thin film develops in this circle. Okay, so when we blew air in it. Okay, so suppose what we are doing, we are, if you blew air in it. Okay, if you blew air in it, so what will happen? If you blew air in it, so what will happen? The bubbles are formed. Okay, small bubbles are formed. Okay, so we are going to talk about this very thin film only. Okay, so this is nothing but film of soap solution. This very thin layer is called as film of soap solution. Okay, this is called as film of soap solution. Okay, so we are going to talk about this such thin film only. Okay, so I hope that you have understood the meaning of this film. Okay, so let us now consider that we are having an arrangement. Okay, and the arrangement is something like this. Suppose we are having these two parallel plastic lines. Okay, and it is a kind of U shape, and it is a kind of U shape, and it looks like this. Okay, and we are having a slider over it. Okay, suppose we are having a slider over here. Okay, suppose this is a slider. Okay, and initially there was a thin film. Initially, suppose there was a thin film of soap solution. Here there was a thin film. Okay, there was a thin film. Now what will happen? You know very well that the free surface of the liquid, it possesses surface tension. So only one side liquid is there. So what will happen? There will be some force which will be developed on this side. Okay, so what will happen? There will be a force. Okay, so there will be forces which will be developed on this side. Okay, and why these forces are developed? This force is developed due to surface tension. So we can say that it is being developed due to surface tension. So surface tension is acting in this direction. So what will happen due to surface tension? Due to surface tension, this slider, okay, this is the slider. So this slider, what will happen? This slider will move due to the surface tension. And suppose this slider moves. Okay, so what happens? So I'll draw here. So what is happening? This slider, suppose this slider has moved and up to a length L. Okay, now what we are having a new slider. Okay, so we are having the new slider. Suppose the slider has reached here. Suppose the slider has reached here. Okay, so now now you understand, you try to understand. Now this will be our film, only this much. Okay, only this much will be our film. Okay, so now if this much is our only film, so what we have understood that there is a contraction of total length. How much? Total length L in this. Okay, suppose this length is L up to which it has contracted. Okay, so this was the earlier position, this was the initial position of the slider. Okay, and this is the final position. Okay, so now we can understand, suppose it has contracted up to a length. Suppose this is not L, let it be delta x. Okay, suppose it has contracted up to a length of delta x, and this length of the slider is nothing but given as L. Okay, so now we can understand the force acting here is T into L. Okay, so now you see that this film, whenever we are having a film, so this film has two free surfaces, one from upper side
Okay, one from upper side, and same free surface is there from lower side as well. Okay, from lower side. So what will be the total surface tension? If surface tension for upper surface is T into L, similarly for lower surface also it will be T into L, and for upper surface T into L. So the total will be how much? Total force will be 2 into T into L. That is 2 times of T into L. Okay. So the work done here, if we'll write, so work done here will be force into displacement. So that will be equal to W is equal to force is 2TL into, and the distance covered here is X. Okay. Or we can say delta X rather. Okay. So we can write, instead of X, we can write it as delta X. Okay. So what is the change in area? So this much area, we have understood that this much area is changed. And this much area, this area is nothing but L into delta X. This is the delta A, that is change in area. So delta X into L, these terms make up nothing but our change in area. Okay. Change in area. Okay. So we can write it as that work done is equal to 2 into surface tension T into delta A. Okay. Or we can write that twice the change in surface area, because surface area is changing on upper side as well as lower side. So we can write work done as that work done is equal to tension T into twice of change in surface area. Okay. Okay. So this twice, 2 times of delta A is nothing but change in surface area. So generally what we can write for a general formulation, we can write that work done will be equal to surface tension into change in area. Okay, total change in area, that is from upper side as well as lower side. We will add it, so that will that comes out to be, that makes up our total surface area. So this is going to be our work done, or formula for the surface energy. Okay, and this work done is nothing but energy, which is called as surface energy. This is what? This is our surface energy. Okay. So now we can represent this work done as E. So surface energy is equal to tension into change in area. So from here, one more definition for surface tension comes. So tension is equal to surface energy divided by change in area. So what is the new definition? Okay. So this can be our new definition. So what we can write here about surface tension. Okay. So we will write on the next page. Let us move on to the next page. Okay. So we can write that our surface energy, or sorry, surface tension T. Okay. So our surface tension will be nothing but surface energy. Surface tension will be surface energy, stored per unit, surface energy stored per unit area, surface energy stored per unit area. Okay, this is the per unit area in free surface. That is nothing but our surface tension in free surface. This is our surface tension. You can write here that this is our surface tension. So this is the one more definition based on what? This is the definition of surface tension based on surface energy. Okay, so this is our surface tension based on the surface energy. ओके तो बच्चे देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन आ गई, ठीक है, यानी कि सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट आवर सरफेस टेंशन, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी सरफेस टेंशन हो जाती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब बच्चे हमें पता चल गया कि हम सरफेस एनर्जी कैसे निकालने वाले हैं। हम सरफेस एनर्जी जो है, सरफेस एनर्जी हम निकालने वाले हैं टेंशन टी इंटू चेंज इन एरिया, ठीक है, ये करेंगे हम सिंपल सा मैथ्स, ठीक है, हमने देख लिया ये कैसे ड्राइव हुआ, कैसे आया, ये सब हमने देख लिया, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें सरफेस एनर्जी पता चलेगा, ठीक है। अब चलिए
अब बच्चे देखो यहाँ पर सरफेस एनर्जी जो है इसको हम दो टाइप से फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक तो हम फाइंड करते हैं बच्चे, एक तो फिल्म या बबल के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो देखो फर्स्ट केस हम लेते हैं, फर्स्ट केस है हमारा, या तो हमारी कोई फिल्म है जो अभी अभी मैंने केस लिया था, या फिर हमारा कोई बबल है, ठीक है। तो जब भी कोई हम फिल्म या फिर बबल का केस लेंगे तो क्या होगा, देखो फिल्म में क्या होगा, फिल्म में एक पतली सी लेयर होगी, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारी फिल्म की लेयर है, तो इसके दोनों साइड एयर है, ऊपर वाली साइड भी एयर है और इधर वाली नीचे वाली साइड भी एयर है। अगर हम सेम बबल लेंगे तो बच्चे बबल में क्या होगा, देखो ये हमारा बबल है, ठीक है। तो बबल में भी क्या होगा, बबल में भी क्या होगा, देखो बाहर भी एयर है, ठीक है, ये इसकी सरफेस है, यानी कि फिल्म है पतली सी, और अंदर भी क्या है, अंदर भी एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सरफेस एनर्जी निकालेंगे, देखो कंसेप्ट समझो, यहाँ पर अगर हम सरफेस एनर्जी निकालेंगे तो देखो दो सरफेस, डबल सरफेस में लेना पड़ेगा, कि सरफेस एनर्जी क्या होगा, टी इंटू टोटल एरिया, चेंज इन टोटल एरिया, यानी कि एक आउटसाइड एक इनसाइड, सो हम लेंगे ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए, ठीक है। समझ में आया टू क्यों आया? टू इसलिए आया क्योंकि बच्चे वहां पर दो फ्री सरफेस है, ठीक है, बबल के अंदर भी और बाहर भी, और फिल्म के ऊपर और नीचे दोनों साइड दो फ्री सरफेस है, तो दो फ्री सरफेस है, इसलिए जो ए चेंज इन एरिया हो उसे हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर सेम कंसेप्ट अगर आप सेम कंसेप्ट देखोगे बच्चे ड्रॉप के लिए, इन केस ऑफ ड्रॉप, इन केस ऑफ इन केस ऑफ ड्रॉप, ठीक है। अब बच्चे अगर आप देखोगे तो ड्रॉप में देखो एक्चुअल में क्या होगा, ड्रॉप में क्या होगा, ड्रॉप मान लो हम यहाँ पर एक ड्रॉप बनाई हमने, ठीक है। तो बच्चे लेकिन इस ड्रॉप के अंदर क्या भरा हुआ है, इस ड्रॉप के अंदर तो वाटर है, पानी है, यानी कि अंदर तो कोई फ्री सरफेस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फ्री सरफेस कौन सा है, फ्री सरफेस ओनली आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री सरफेस है वो कहाँ पर है, फ्री सरफेस इज प्रेजेंट ओनली आउटसाइड, ठीक है। तो फ्री सरफेस जो है ओनली ओनली एंड ओनली कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटसाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आउटसाइड वाला हमारा फ्री सरफेस है बच्चे, ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, है ना। जितना भी अगर यहाँ पर हमारी ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या एक्सपेंड कर रही है, बेस्ड ऑन दैट हमारा चेंज इन एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे अगर हम सरफेस एनर्जी अपनी लिखेंगे तो हमारी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू टेंशन P, दैट इज सरफेस टेंशन, इनटू डेल्टा ए, यानी कि चेंज इन एरिया, और ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, ये हो जाएगा हमारा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीजें देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ हमें टू से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ हमें टू से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर टू से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये सरफेस एनर्जी या फिर इसको हम वर्क डन बोल ले, ठीक है। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये कंसेप्ट वो बच्चे हमारे सरफेस एनर्जी का, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी को हमने समझा कि एक्चुअल में व्हाट इज सरफेस एनर्जी, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बच्चे, उस आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या पढ़ेंगे, उस आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग जो सरफेस एनर्जी के जो केसेस हैं, बबल फॉर्मेशन, ड्रॉप फॉर्मेशन, ठीक है, कोलास, अलग अलग ड्रॉप्स का मिलके एक जगह कोलास होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम अगले आने वाले लेक्चर में सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।